So in the morning period, we have seen the Davison and Germer experiment, and when some connectivity problem was there, we were discussing about the uncertainty principle. So we will see the uncertainty principle first. In the morning period, we have already seen this one, Davison and Germer experiment, isn't it? And we have seen that the Davison-Germer experiment was carried out to give the confirmation of the de Broglie's hypothesis that matter possess wavy nature as well as particle nature, and particularly the wavy nature of the matter was confirmed by the result that when the beam of electron get incident or striking the plane of nickel crystal, they get diffracted and diffraction pattern is obtained. And as the diffraction of the electron is taking place after falling or after striking the crystal planes, then it leads us to the conclusion that the beam of electron that is coming from the electron gun, it is nothing but it is moving in form of wave, which confirm the de Broglie's hypothesis that matter is in form of what? Matter किसकी शक्ल में है? Crystal. Matter is in form of the wave. Matter is in form of wave. So all these things we have seen this morning. So I will just go to the next point. That is the uncertainty principle, the most important article that I would like to share with you. So as I have told you that uncertainty principle is one of the most important article of the quantum mechanics. It is not only important from the examination point of view, but it is also most important as far as the study of quantum mechanics is concerned. It has a particular type of statement. You can say that the uncertainty principle is play the role of backbone in the field of quantum mechanics. जैसे वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो रूल है, जो कैरेक्टर वो प्ले करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते ना अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में 3 लॉज है बोल के, तो सिमिलर टाइप ऑफ रूल इज प्लेड by the Heisenberg uncertainty principle as far as the quantum mechanics is concerned. So before going to the statement of the uncertainty principle, first of all, I would like to explain one thing. Now, can you see my cursor on your screen? Now concentrate very carefully. Can you see my cursor? Yes. Yes. So my cursor is presenting what? What is this? This figure number 1 on which my cursor is there. Can you see this is the wave? Can you tell me this is the wave? है कि नहीं wave चैनल? Yes. Now you know wave is consisting of alternate crest and trough. Now all of you may please unmute yourself. Keep unmute and tell me yes or no. Do you yes. know wave is consisting of crest and trough, isn't it? Yes. Now this wave is nothing but it is the motion of particle. Here it is the particle and it is moving in form of wave. Am I correct? Particle is there and it is moving from one place to the another place in form of wave. Are you agree with this? Yes. This particle at the time of moving from one place to the another place is obtaining the wavy nature. We can say that this is the de Broglie's wave. Am I correct? Are you agree? Yes. See here. Now, when this particle is moving in form of the wave from one place to the another place, that means it is having the wavy nature. That means it has the wavelength. Are you agree? Are you agree? Yes. That means in this wave, जो के particle की है, particle ही है, in this wave or in this motion of particle in the first equation or in the first figure, if I want
to determine two things regarding the particle. One, I want to determine the wavelength of the wave which the particle obtained at the time of moving, and I want to know the position of the particle in some time t. समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? केयरफुली सुन लीजिए. ये वेव के अंदर पार्टिकल की पोजीशन मेरे को निकालने की. समझो यहां से पार्टिकल ने हरकत करना शुरू किया. अगले 5 मिनट के बाद मैं हमारा काम क्या है कि ये हरकत करते हुए पार्टिकल के दो चीजें निकालना. Isn't it? कौन कौन सी दो चीजें निकालना? कौन से दो चीजें निकालने जा रहे हैं आप? प्लीज टेल मी. वन इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल and second one is the wavelength of the de Broglie's wave. Am I correct? Are you getting, please? Are you getting, please? Yes, sir. Now, please tell me in the first equation or in the first figure, position of the particle can be easily determined in the next 5 seconds because distance between two successive crest and trough is very less. यानी कि क्रिस्ट और ट्रफ बहुत एक दूसरे के करीब है. पहचानना मुश्किल है ये पहला है कि ये दूसरा है कि नहीं. प्लीज ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू अनम्यूट योरसेल्फ. ऑल ऑफ यू, अफशा, अफीफा, मुस्कान, ऑल स्टूडेंट्स आर requested to unmute yourself and sit at a proper place at your home so that there will be no back sound and you can give the proper attention to my lecture. My question is that the distance between two crest and trough is very close, and in this case the position of the particle can be easily determined. Are you agree? Yes, sir. यानी कि अगले 5 मिनट में अगर आपको बोले पार्टिकल की पोजीशन मालूम करो तो आप पार्टिकल की पोजीशन दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि वेव को फिरने की जगह बहुत कम है. इतना हिस्सा है क्या नहीं? जितनी वेव छोटी रहेंगी उतने पार्टिकल की जो है तो घूमने फिरने के लिए जगह कम रहेंगी. एम आई करेक्ट? और आप पार्टिकल की पोजीशन अगले 5 मिनट में, अगले 10 मिनट में जो भी आपको बोला जाए अलॉटेड टाइम, उसमें पार्टिकल की पोजीशन ज्यादा सही मालूम कर सकते हैं. एम आई करेक्ट? Yes. लेकिन अगर आपको यहाँ मैं बोलूं कि पार्टिकल की वेवलेंथ मालूम करो, ये वेव की वेवलेंथ मालूम करो, क्योंकि पार्टिकल किसकी शक्ल में हरकत कर रहा? वेव की शक्ल में. इस वेव की वेवलेंथ मालूम करो. वेवलेंथ बोले तो क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ. नाउ हियर इन द फर्स्ट फिगर क्रिस्ट एंड ट्रफ आर वेरी क्लोज टुगेदर, isn't it? Therefore it is very difficult to determine the इतने करीब करीब है दोनों क्रिस्ट और ट्रफ कि अगर आपको दो सक्सेसिव क्रिस्ट के दरमियान का फासला मालूम करो बोले तो आप ज्यादा एक्यूरेट मालूम नहीं कर सकते. एम आई करेक्ट? Yes. अगर आप इसके लगा के दो क्रिस्ट किसको बोलते हैं? जैसा ये दूसरी फिगर में ये क्रिस्ट और ये क्रिस्ट है. अब दूसरी फिगर में दोनों अच्छे दूर है एक दूसरे से. अगर आपको बोले इसके लगा के दोनों के दरमियान का फासला निकालो बोले तो आप ज्यादा सही नहीं. इसके लगाएंगे पट्टी अपनी और ये दोनों के दरमियान का फासला आसानी से गिन सकते हैं. बराबर है? और वो ज्यादा सही भी आएगा. लेकिन इसके बरखिलाफ अगर मैं इस फिगर में अगर आपको बोलूं कि वेवलेंथ कैलकुलेट करो या वेवलेंथ डिटरमिन करो किसकी? वेव की, तो उसमें क्रिस्ट और ट्रफ एक दूसरे से इतने करीब करीब है कि जो वेवलेंथ आप मालूम करेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट रहेंगी. क्या आपके ऐसा इससे लगाया था क्या गिने गिने तक वेव अपनी पोजीशन बदल देगी? एम आई करेक्ट? एंड द वेवलेंथ यू हैव डिटरमिन इन दिस केस इज नॉट मोस्ट करेक्ट और एक्यूरेट होने की एक्यूरेसी का उसका परसेंटेज कम रहेगा. एम आई करेक्ट? Yes, sir. उसके बरखिलाफ यहाँ पे पोजीशन आप आसानी से मालूम कर सकते हैं. समझ में आ रही बात? इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि एक छोटा सा बॉल है और बॉल जो है तो किसके अंदर है? बॉल ऐसा फिर रहा खुद ब खुद, उसको चाबी भरी हुई है, बॉल ऐसा ऐसा उचक रहा. एम आई करेक्ट? पहले मर्तबा बॉल को छोटी थैली में डाले. छोटी थैली रहती ना अपनी, इतनी थैली जो लगाने की रहती, मामूली थैली, ये छोटी थैली के लिए पर्स समझ लिया. ऑल आर गर्ल्स आर हियर में तो है ना अपना पर्स रहता, पर्स के अंदर वो डाल दिया आपने छोटा बॉल और वो बॉल ऐसा ऐसा अंदर उचक रहा समझो. और आपको अगर इधर मुंडी करके बोले हाथ अंदर डालो और उसको बॉल को पकड़ लो. एम आई करेक्ट? तो आपका हाथ ज्यादा से ज्यादा सही पोजीशन पे जा सकता. एम आई करेक्ट? आर यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट? यस सर. कि आप थैली में हाथ डालेंगे तो करीब करीब आपका हाथ पूरे थैली के बराबर, पर्स के बराबर डाले के पकड़ लेंगे आप बॉल को. एम आई करेक्ट? यस. Isn't it? लेकिन
पोजीशन करेक्ट, लेकिन इसके अंदर अगर आपको बोले कि वो जो वेवलेंथ थी, क्योंकि पार्टी वेव ऐसा 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 जा रहा था, वहां पर वेवलेंथ निकालो बोले तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं आ सकती। क्यों? कि क्रिस्ट और ट्रफ एक दूसरे के, क्योंकि दिस वेव इज वेरी नैरो वेव। वेव कैसी है? नैरो है, यानी क्रिस्ट और ट्रफ के दरमियान का फासला कैसा है? बहुत कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है। कम है। So that means you can determine the position of the particle most accurately, but wavelength of the wave which you have determined is not accurate. There is the uncertainty regarding the measurement of wavelength. Are you agree with this statement? Yes. Now let us come to the second figure. Now in the second figure, what is the difference between first figure and second figure? Both are wave, no doubt. But in the second wave, what is there? The crest and trough are prominent position from each other. Wide wave is there, isn't it? Distance between two successive crest or two trough is appreciable. You can determine the, now in this case also you have asked to determine the position of particle and you have asked to determine the wavelength of the wave. Now in this case what happened? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अगर मालूम करो बोले अगले 5 सेकंड में, तो वो ज्यादा सही नहीं हो सकती। अब वही बॉल जो मैंने बोला था ना थोड़ी देर के लिए, अंदर ऐसा ऐसा जा रहा पर्स में, अब पर्स हटा दो, बड़ा थैला लो शक्कर का, रहता ना बड़ा थैला जिसमें गोश्त लाते कुर्बानी के दिनों में, am I correct? Such type of big bag is there, isn't it? And that ball is moving inside this big bag, और आप इधर देख के ऐसा हाथ डाल के बैग को पकड़ो, बॉल को अंदर ले बोले, जरूरी है कि आपका हाथ बराबर बॉल पे जाएगा? पहले चट्टे में आप पकड़ लेंगे बॉल को, पहली पोजीशन जो आप दे रहे हो एक्यूरेट रहेंगे? नहीं। क्यों? कि बॉल को घूमने फिरने के वास्ते जगह ज्यादा अवेलेबल है, isn't it? Are you getting please? The position of the particle. Yes sir. So here in the second case, it is difficult to determine the position of the particle most correctly. But on the other hand, you have asked to determine the wavelength. Now wavelength here you determined is most correct. Kyun? Because crest and trough, suppose this crest A and this crest C, they are at a prominent position from each other. You can measure easily and the measurement is more accurate. Are you agree with my statement? Yes sir. What is the difference between the first figure and second figure? पहले में पोजीशन ज्यादा सही मालूम नहीं कर सकते थे तो वेवलेंथ सही मालूम नहीं होती थी, दूसरी में वेवलेंथ ज्यादा सही मालूम हो रही तो पोजीशन सही मालूम नहीं हो रही। आर यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट अफीफा? जी सर। दैट मीन्स यहां से क्या स्टेटमेंट ले, मैं ऐसा बोलूं क्या कि इन केस ऑफ द डी ब्रोगलीज वेव it is very difficult to determine the position of particle and wavelength of the de Broglie's wave simultaneously with maximum accuracy. ऐसा बोल सकता है क्या भाई कि डी ब्रोगलीज वेव में पार्टिकल की पोजीशन और डी ब्रोगलीज वेव की वेवलेंथ दोनों भी बेक वक्त साइमल्टेनियसली एक साथ एक्यूरेट मालूम करना बहुत मुश्किल है या डिफिकल्ट है, ऐसा बोल सकता है कि भाई पहले उसमें पोजीशन ज्यादा सही है तो वेवलेंथ सही नहीं है, दूसरे उसमें वेवलेंथ सही है तो पोजीशन सही नहीं है। तो क्या इसका जो है तो जो इसको मैं ऐसा बोलूं कि अपने सेंटेंस में कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगलीज वेव साइमल्टेनियसली विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी, ऐसा बोल सकता है क्या मैं? या आप आपके अल्फाज में बोलिए कैसा बोलना है इसको। आर यू एग्री? हफीफा, आफशा, मजिया, समझ में आ रही बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। लेकिन एक बात समझ में ना आपने कि ये वेव में वेवलेंथ में अगर वेव अगर नैरो है तो पोजीशन ज्यादा सही मालूम हो सकती है, वेवलेंथ ज्यादा सही मालूम नहीं होंगी। वेव अगर वाइड है तो वेवलेंथ एक्यूरेट रहेंगी, पोजीशन एक्यूरेट नहीं रहेंगी, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों में से कोई एक ही अपन एक्यूरेट मालूम कर सकते हैं। दोनों साइमल्टेनियस एक्यूरेट मालूम करना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ, बोलूं क्या? It is very difficult, yeah, it is impossible to determine the position of particle and wavelength of the de Broglie's wave simultaneously with maximum accuracy. ऐसा बोलूं मैं? Yes sir. ये मेरा स्टेटमेंट सही है कि अफशा, आफीफा, मदिया सब?
Yes, sir. Are my statement is correct? Yes. And this statement is nothing but it is called as uncertainty principle. This statement is called as uncertainty principle, and this uncertainty principle is applicable to all canonically conjugate variables. यहाँ पर मैंने वेवलेंथ और पोजीशन बोला, या वेवलेंथ और मोमेंटम हो सकती, मोमेंटम और जो है तो वेवलेंथ हो सकती, ये तमाम जितने कैनोनिकली कॉन्जुगेट समझता ना, एक क्वांटिटी अपने एक्यूरेसी के वास्ते दूसरे पर डिपेंड रहती, उसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकली कॉन्जुगेट. तो यहाँ पर अगर position is most correctly obtained, then it is very difficult to obtain the wavelength most accurately. If the momentum of the particle is determined accurately, then the wavelength cannot be determined accurately. And this is nothing but it is called as uncertainty principle. Now all of you are requested to unmute yourself and tell me whether you have got the uncertainty principle or not. समझ में आया कि तुम्हारे uncertainty principle? Unmute yourself and tell me. Yes, sir. अफशा, अफीफा, मुस्कान, अनम, सबको समझा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? नाम में से समझ में आता, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, प्रिंसिपल यानी कि एक चीज सही तो दूसरी ज्यादा सही नहीं. That is called as uncertainty principle, and this principle was given by the scientist Heisenberg. Therefore, this it is called as the Heisenberg uncertainty principle. It is called as Heisenberg uncertainty principle. समझ में आ गई बात आपके? May I go ahead? May I go please? आगे चलूं? Yes, sir. So Heisenberg uncertainty principle state that it is impossible to know both momentum and position of the particle at the same time with maximum accuracy. This limitation is critical when dealing with the small particles such as electrons, but it does not matter for ordinary size objects such as cars. और ये किसकी बात चल रही? आप बोलेंगे कार के, उसके बड़े बड़े बॉडी की, अपन है काय के अंदर? We are, whether we are in classical mechanics or in quantum mechanics, we are in quantum mechanics, and quantum mechanics deals with the smallest particle, isn't it? तो यहाँ सारी बात किसकी चल रही? एटॉमिक पार्टिकल्स की, छोटे पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक साइज पार्टिकल की. तो उसके अंदर ये बात समझ में आई कि दो क्वांटिटी में से, दो फिजिकल क्वांटिटी में से एक अगर ज्यादा सही मालूम करे तो दूसरी की एक्यूरेसी उतनी सही नहीं रहती. If the x is the position of the particle, then delta x is the uncertainty in the position of particle. If p is the momentum of particle, then delta p is the uncertainty in the measurement of momentum of the particle, isn't it? So you can write in this way, delta x into delta p, you can determine. Heisenberg uncertainty principle can be obtained by locating the electron. If you want accuracy in the position, we must use the short wavelength. बराबर है? अगर position सही मालूम करनी की तो wavelength कैसी कर रहे हो? Please tell me. Wavelength should be very short, because the best resolution we can get it is the wavelength of radiation used. Short wavelength radiation implies high frequency, high energy photon, and when this collide with the electron, they transfer the more momentum to the target. And if we use the longer wavelength, then less energetic photons will be obtained. And that means we can say that Heisenberg uncertainty principle can be given for the free particle if the position momentum is completely specified, then position is unspecified. And when the momentum is completely unspecified, then the position is unspecified. यानी कि एक ज्यादा सही मालूम रहा तो दूसरा ज्यादा सही मालूम नहीं रहेगा. Isn't it that they are vice versa to each other? If P is the momentum, then delta P is the uncertainty in the momentum. And therefore here delta P is equals to 0 कब? When P1 is equals to P2, when they are unspecified. And when the position is completely unspecified, position अगर हम x से denote करें तो delta x tends to infinity. In general, we can say that delta x into delta P is greater than or equal to a constant. ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, it is impossible to determine, ये तो हो गई theoretical statement uncertainty principle की. लेकिन mathematical statement क्या है uncertainty principle की?
delta x into delta p is approximately equal to a constant. Yeah, in other words, delta x into delta p is greater than or equal to a constant. What is delta x? Please tell me. What is delta x? Are you there, all of you? चेंज बोलने के बजाय यहाँ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोलिए आप. इस यहाँ चेंज नहीं बोलेंगे हम, यहाँ क्या बोलेंगे? x is the position, then delta x is the uncertainty in position. P is what? Momentum. Then what is delta p? Please unmute yourself and tell me. Afifa, delta p is change in momentum. चेंज इन मोमेंटम बोलने के बजाय यहाँ क्या बोलो उसको? अब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. क्या बोलो? अनसर्टेनिटी इन momentum. So delta x is the uncertainty in position, delta p is uncertainty in delta x is uncertainty in position, delta p is uncertainty in momentum. Then according to the uncertainty principle, product of uncertainties between position and momentum of the de Broglie's wave, it is approximately equal to a number, and this is nothing but it is called as the mathematical form of Heisenberg uncertainty principle. The statement which I have told you, that it is impossible to determine the position of particle and wave of the de Broglie's wave simultaneously. This uncertainty principle statement mathematically can be written as delta x into delta p is greater than or equal to a constant, approximately equal to a constant. It is nothing but it is uncertainty principle. And this uncertainty principle is not only applicable to the position and momentum, but this uncertainty principle is applicable to all canonically conjugate variable. You may apply it to this energy and time. You may apply this to position and momentum. You can apply this to the position and wavelength. तो जितने भी canonically conjugate variables है, किसके? हरकत करते हुए पार्टिकल के, जो कि किसकी शक्ल में हरकत कर रहा? In form of what? Wave. So all this concept, all these terms are, all these canonically conjugate variables, they have the uncertainty principle. Can you understand, or may I repeat it again? क्या एक और पीरियड जरूरत है इसको लेने के लिए, कि समझ में आई आपके बात? आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, प्लीज. अफीफा, अफशा, अरबाज, are you getting, please? Are you getting? Yes, sir. So this is nothing but this is the uncertainty principle. This can be compared. H is the Planck's constant. ये जो constant बोले ना, तो constant is h upon 2 pi, where h is the Planck's constant and 2 pi 2 into 3.14. So therefore uncertainty principle can also be written as delta x into delta p is equal to h cross. H cross बोले तो h upon 2 pi, a constant in this way. Planck's constant तो आपको मालूम है, h 6.625 to 10⁻34 joule second. So we can write delta x into delta p is greater than or equal to h cross. This is nothing but this is the statement of mathematical form of किसका मैथ. ये इक्वेशन याद रखिए, delta x uncertainty in position, delta p uncertainty in क्या? Momentum. It is approximately equal to या greater than equal to h cross. h cross बोले तो क्या? h upon 2 pi. 2 pi. H is what? Planck's constant. And this important equation is there. This is nothing but this is the mathematical representation of uncertainty principle. If theoretically, if you are asked to give the statement of uncertainty principle, then you can give the statement, it is impossible to know simultaneously and with exactness, यानी कि maximum accuracy. Exactness बोले तो दोनों में से एक exact मालूम कर सकते तो दूसरा नहीं, दोनों एक साथ exact मालूम नहीं किए जा सकते. It is impossible to know simultaneously and with exactness both position and momentum of fundamental particle. This is nothing but this is uncertainty principle. Position भी बोल सकते हैं, मोमेंटम भी बोल सकते हैं, टाइम और एनर्जी के लिए भी आगे हम देखेंगे. टाइम और एनर्जी के लिए भी, क्योंकि मैं पहले क्या बोला, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हर किसको लागू होता? तमाम कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल्स.
यहाँ पर पोजीशन और मोमेंटम है, एनर्जी और टाइम ये भी डिपेंड करते हैं ना एक दूसरे पे, कितने वक्त में कितनी एनर्जी रिलेट हुई, किसके साथ है इनका रिलेशन, इट इज कैनोनिकली कॉन्जुगेट. So this is the uncertainty principle. We will also have the particle moving in 3 dimension. Then at that time we can write that uncertainty principle delta x into delta px. क्या बात हो गई है? Delta x बोले तो क्या? Position of the particle along x axis into delta px means momentum of the particle along कौन सा axis? Y axis and Z axis. Z axis and Y axis. तो दोनों वक्त हम यानी कि uncertainty principle can be given for the motion of the particle along the x axis as well as along the y axis or as well as along the z axis. We can apply this to all 3 directions. So you can write in this way also. P all this uncertainty principle short में energy और time के लिए भी लिख सकते हैं, आगे भी बताएंगे. Uncertainty principle can be written as delta P is approximately equal to h upon lambda, or in this way you can write delta x into delta P. Uncertainty principle can also relate the energy and time. Energy और time क्या से लिखने का तो कैसा लिखेंगे? Delta E into delta T is equal to h, where delta E uncertainty in energy and delta T uncertainty in क्या है? Time. This can also be asked in the examination. Uncertainty principle for energy and time. Another form of the uncertainty principle is concerned with energy and time. Consider a measurement in the energy EZ emitted during the time interval delta T in the atomic process. The atomic process होती है ना, emission of electron, proton, ये सब क्या? It is the atomic process. So let us consider that the atomic process is taking place in which the certain amount of energy is emitted, suppose E in time delta T. Assume that energy is in form of electromagnetic waves. Then the electromagnetic wave बोले तो ऐसे आ गए. The energy is h nu and therefore the uncertainty in the energy is delta E is equal to h delta nu. To measure the frequency nu, we account the wave number, that is n, time interval delta T, and therefore we can write delta nu is equal to 1 is greater than or equal to 1 upon delta T, and therefore if I simplify this equation, it is delta E into delta T is greater than or equal to a number h cross or h, and this is nothing but it is called as what? यही equation क्या कहला रही? Delta E into delta T is greater than or equal to h cross upon T means what is this? क्या है ये? Please unmute yourself and tell. What is this? Uncertainty principle for energy and time. Time. The product of uncertainty in energy measurement and uncertainty in the time which measurement is made greater than equal to h cross. So with this one, we complete this article. Thank you for joining me. Remaining thing, inshallah.